Hello everyone, this is Irfan and I have a very special friend today, Puneet Malhotra. Very excited to discuss today. He's a consultant pharmacist and it's very helpful to know from the journey that he has completed to become a consultant pharmacist. So, Puneet, कैसे हैं? How are you? Good, thank you, Irfan. That's very good. तो कुछ हमें बताएं अपने दोस्तों को कि आपने कंसल्टेंट फार्मासिस्ट क्यों बने और ये बनते कैसे होता क्या कंसल्टेंट फार्मासिस्ट? And when I started as a regional pharmacist in Australia. Okay. I came to Australia in 2006, Right. and then I did my masters. And after that, I have to write. In those days, it was called EPIC. Okay. Now I think it's called CAPS. CAPS exam, yes. CAPS. And so in those days, there were very few people who used to do it. It was quite tough. Tough, yes. And then you have to find an internship. In those days, I'm talking 2008, 2009. Right, It yes, I was remember that, yes. it was not easy. You would know. And I wrote that exam, and by God's grace, I passed. And then there was an issue with my visas. Yes, I remember. Yes, I remember that. Yes. But yeah, coming to the consultant part, I worked as a regional pharmacist, and then I came working as community pharmacist for Right. at least 10 or 11 years. I thought I should do Wow. something for more like clinical. So Right, okay. I started doing HMR, which is home medication review. Right, You have okay. to do you have to pass those exams, the ASCP exam. And then I started also working in a hospital at Victor Harbor, which is not again Adelaide, it's regional. Regional. Okay, so you spend most of Most your journey in Australia in regional. regional. Yes. Okay, that's very good point. That what Puneet just said, that regional working in region make you more experienced. You get Yes. a lot of things which you probably can't get in the city area. So this is what Puneet is trying to say. और पुनीत की जो खास बात है वो ये कि उन्होंने अपनी एपेक की जर्नी के बाद एक और स्टेप लिया जिसको अभी उन्होंने बताया कि वो कंसल्टेंट फार्मासिस्ट बने और उसका जो रोल है वो थोड़ा सा बताएंगे हमारे सुनने वालों को कि इसमें आप करते क्या हैं, व्हाट इज कंसल्टेंट फार्मासिस्ट डू? So consultant pharmacy basically does medication reviews. So medication review is done of a patient who's already seeing a doctor, and the doctor wants them to go and educate them about their medications, how they keep their medications, are they taking what the doctor has prescribed? Because as you know, there will be a different, the doctor has written something, but they're taking it very differently. And if there is any discrepancy in what the doctor is written and the patient, so what we do is we write a letter or call the doctor and say, look, this is happening, we should do something about it. So the doctor calls the patient again and say, I have sent the pharmacist to you, this is what I found out, and we can change the therapy. ओके, तो ये जो जो कंसल्टेशन है ये थोड़ा सा गाइड कीजिए कि ये आप घर पे जाके करते हैं या Yes. पेशेंट को बुला लेते हैं फार्मेसी पे या मेडिकल सेंटर में आपको कोई रूम दे देते हैं वहाँ आप करते हैं? ये हम तीनों तरीके से कर सकते हैं. वी कैन कॉल द पेशेंट एंड से व्हाट इज योर अवेलेबिलिटी. The first thing you said is the home medication review. We have to come to your residence. Okay. And do it. They can say, look, I don't want you to come to my residence. Then we give this, I can go to your pharmacy, or I can go to your doctor's surgery or the clinic, and we can go there. So these are the three things we do. ओके, सो इस मीन के बहुत सारे हमारे फ्रेंड जो हैं जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट ओवरसीज काम कर रहे हैं इंडिया में, मिडल ईस्ट में या कहीं और भी, या दे आर वर्किंग इन जिम्बाब्वे, दे ऑलवेज हैव अ क्वेश्चन कि I'm a clinical pharmacist, how I can work in Australia. So I think this is a very good example which Puneet has just said, that you come to Australia, come in region and become first registered pharmacist and upgrade your qualification, how Puneet has done through those extra qualification that he has done. Now his earning is higher, he's got a huge respect among other peers as well, because he is not just a pharmacist who behind the counter, he is actually going. And today हमने अभी बात की है यहाँ पे जो यहाँ के क्लिनिक के जो प्रिंसिपल हैं उनसे हमारी एक मीटिंग हुई है, दे इनवाइटिंग अस to their weekly, fortnightly clinical meetings. So this is something which you can't get if you not go to that far. So that's something which is huge privilege and satisfaction for as a pharmacist. और पुनीत का एक जर्नी है जो कि थोड़ा सा वो बताने में बड़ा ख्वाहिश, अभी हम जो वीडियो बना रहे सोच रहे थे तो उन्होंने कहा कि यार ये भी मुझे बताना है, वीज़े का जो एक स्टोरी है, तो उसके बारे में पुनीत थोड़ा सा हमें बताइए कि how that went with you. मेरे साथ मेजर प्रॉब्लम लोगों को कैप्स एग्ज़ाम से होती है, मुझे प्रॉब्लम वीज़ा से थी. ओके, तो एग्ज़ाम मेरा निकल गया था वाह. और मुझे ये बताया गया कि अनलेस एंड अनटिल यू हैव एन इंटर्नशिप
जो कि आई थिंक मेरे ओवरसीज फार्मासिस्ट ब्रदर्स जो हैं वो जानते हैं, यू कांट स्टे इन ऑस्ट्रेलिया. So they gave me 28 days to find a job. And I asked the immigration lawyer that what happens if I can't find a job in 28 days? What will happen? And he said, you have to, otherwise you'll be arrested for unlawful stay. Okay. And then I was not very serious. Then the things got very serious. Okay. And unfortunately, in those days, nobody can. Yes, I had a job, but when I said I want a visa on this job, people got scared. Okay. And unfortunately, I have to go back to India. Oh my God. So you went back to India Yes. because your visa was about to finish. Finish. So you left in Australia On that to 28 be day. safer on, and you follow the rules and regulation. Yes, And yes. because you were unable to get a person or an employer who can employ you Sponsor. and sponsor as well. Okay. 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 And after that, I went, and the problem was you can't tell your parents that you are Oh, here yes. and you don't have a job. Yeah, that's So I very hid hard. that. And I think in those days when I went, it was Diwali. Oh wow. So it was हर Yes, तरफ every, खुशियाँ और and I was, but not Diwali inside. oh my God. So I have a friend who was here, Kedar, Kedar, yes. and if you remember, and then he contacted Irfan Bhai, and then he called me, I think, in a week's time that he needed a pharmacist or an intern, and that's how I came to तो Australia. हमने जब बात की थी तो आप उस वक्त इंडिया में थे. जी अरे जी वाह. ओके, आप दिल्ली में थे उस टाइम जी पे. जी ओके ओके. जी जी तो उस वक्त फिर इन्होंने अपना इमिग्रेशन लॉयर अरेंज किया, जी हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स किए और ये फिर ऑस्ट्रेलिया आ गए. अपना 407 टाइप का जी जी वीज़ा होता था, इंटर्नशिप वीज़ा. यस और सो ऑन फिर फार्मेसी मैनेजर बने, रीजन में काम किया 3-4 साल इन्होंने, और आज अभी भी रीजन में काम करते हैं. जी रहते इधर ही हैं, लेकिन ही हैव अ गुड कार विच एक्चुअली टेक्स हिम एवरीवेयर इन द स्टेट. एंड डॉक्टरों के साथ काम करना, फार्मासिस्टों के साथ काम करना, और बेतहाशा फार्मेसीज़ के लोग इनको जानते हैं और इनकी रेपुटेशन माशाल्लाह से बहुत अच्छी है. अभी कल परसों हम एक कोलीग से बात कर रहे थे कॉन्फ्रेंस में, तो बड़े अच्छे वर्ड्स में उनकी पूरी टीम पुनीत को याद कर रही थी कि ही इज़ अ वेरी लवली गाय एंड ही कम्स टू आवर पार्टीज एंड दिस एंड दैट. एंड सो नाइस टू टॉक पुनीत. एंड आई होप, आई एम प्रीटी श्योर कि ये जो स्टोरी है वो आपको इंस्पायर करेगी कि अगर जब टफ कंडीशंस होती हैं तो क्या होता है. लेकिन इस वक्त वीज़ाज़ में आसानी हुई है, जैसे कि आप सबको पता है कि अगर आप कैप्स कर लेते हैं ओवरसीज़ में, तो आपको इस वक्त स्टेट जो है वो खुद ही नॉमिनेशन दे रही है. तो व्हाई नॉट टेक दिस अपॉर्चुनिटी सीरियसली. कोई हेल्प चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कीजिए. वी कैन गाइड यू इन द एग्ज़ाम प्रिपरेशन एज वेल, फ्री ऑफ चार्ज. हम सब कुछ दे देते हैं. लेकिन जस्ट टेक दिस अपॉर्चुनिटी. और इस वक्त तकरीबन, जैसे कि मैंने बार बार अपनी वीडियो में बताया, कि 200,000 गवर्नमेंट जो वीज़ा देने वाली है इस साल स्किल्ड वालों को, 200,000 12 महीने में इन्होंने दे देने हैं इस लेबर गवर्नमेंट ने. तो ऐसा क्यों नहीं कि सोचें कि एटलीस्ट 1000 फार्मासिस्ट हमारे मैसेज से ओवरसीज से आ जाएं, भले आप इंडिया से हों, भले आप जिम्बाब्वे से हों, या क्योंकि जो फार्मेसी गिल्ड की जो प्रेसिडेंट है, जिसने हेलन जो ओब्राइन, उन्होंने हमारे साथ एक कॉन्फ्रेंस की थी. उसमें उन्होंने खुल के बताया था कि वी आर डेस्परेटली क्राइंग आउट फॉर रीजनल फार्मेसी जॉब्स. वी गॉट 3500 जॉब्स वेकेंट इन अवर रीजनल फार्मेसीज, बिकॉज रीजनल में यहाँ के ग्रेजुएट्स नहीं जाते हैं. तो टेक दिस इज अ सीरियस अपॉर्चुनिटी टू डेवलप योर कैरियर हियर इन दिस कंट्री. एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, आई हैव इन साउथ ऑस्ट्रेलिया वर्कड इन 40 pharmacies. Only 12 in Adelaide, the rest is all around South Australia. So if you can see the map of South Australia, I worked for Irfan Bhai at Coober PD, Ororo, Corn, Port PD. Then I worked Murray Bridge, Menham. I worked Kapanda, Udanda, Barra, Clare. There is no Kingston, Tailem Bend. Um, what's the other one? Tailem Bend, Border Town. Katina, I think you just went to Katina. Katina. पोर्ट पीरी गए हुए थे आप Port कुछ दिन PD, पहले, जी, जी. और यू हैव अ प्लान टू विजिट ओरोरू And एंड कॉन एज वेल. I love regional towns. People are more good, nicer, and they're very welcoming as compared to the cities. And I will again say, regional pharmacies is the best. जी जी बिल्कुल. और एक बात और, अभी जब मैं कल एक साहब से बात कर रहा था कि आप जब ओवरसीज से आप आ जाते हैं, तो जब आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो एवरीथिंग इज़ इक्वल. इट डजेंट मैटर कि आप सीबीडी में रह रहे हो या रीजन में रह रहे हो, एवरीथिंग विल बी न्यू फॉर यू. सो जो
जो एक्सपीरियंसेस हैं हमारे दोस्तों के या हमारे वो एक हमने आपसे इसलिए शेयर किए कि इट कैन मेक योर लाइफ ईजियर रादर देन थिंक कि मेरे रिलेटिव्स जीलोंग में रहते हैं तो मैं जीलोंग में जॉब ढूंढूंगा, मैं उससे इधर उधर नहीं जाऊंगा। तो डोंट concentrate on those objective, just find a job in region because jobs region में खाली हैं। Okay, thank you very much Thank Puneet you, for Irfan. for talking Thanks. to us, thank you, Best of luck. thank you, thank you।